दोस्तों आज से 7 साल पहले जब मुझे मेरा पहला मल्टीबैगर मिला था और मैंने उस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उससे लगभग मुझे 1 सवा लाख का बेनिफिट मिला था। उस समय मैं जॉब में था। मैंने रियलाइज किया कि जॉब पे जितना मुझे 1 महीने में सैलरी मिलती है उतना लगभग मुझे बेनिफिट हो गया था थ्रू स्टॉक मार्केट बैक देन इन 2017। पहला मल्टीबैगर मिलने की जो एक्साइटमेंट थी इसको मैंने जाया नहीं होने दिया और आई कीप लर्निंग। आई काइंड ऑफ ट्राई टू गेट मोर नंबर ऑफ मल्टीबैगर्स और इसी endeavor का आप रिजल्ट देखेंगे कि now I have 60 plus stocks which I get put in the same category which has resulted for me doubling of my bank। 1 से 60 की जो जर्नी है that has happened over last 7 years and इन 7 सालों में पिछले 4 साल की जर्नी तो मैंने आपके साथ साझा की है YouTube के माध्यम से। मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद था कि जो मैंने सीखा है उसे मैं आपके साथ शेयर करूं और उसी अटेम्प्ट को साधन चैनल का मैंने नाम दिया और बहुत सारे मल्टीबैगर हमने आपके साथ शेयर किए और उनके साथ शेयर किए कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप भी मल्टीबैगर जनरेट कर सकते हैं, मल्टीबैगर आइडियाज को फाइंड कर सकते हैं। इफ यू लुक एट माय मल्टीबैगर्स देन वन क्वेश्चन समबडी कैन आस्क कि इसमें क्या कॉमनैलिटी है, बिकॉज वन साइड यू विल हैव 10 बैगर फॉर अस लाइक शक्ति पंप। इसमें एक स्कीम जो पीएम कुसुम योजना था उसके इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से हमने ये 10x रिटर्न जनरेट किया। वही दूसरी तरफ एक कंपाउंडर टाइप का स्टॉक जैसे एक्शन कंस्ट्रक्चर जो 10x हुआ हर क्वार्टर उससे एक्सेलरेट करते गए करते 10x की जर्नी अचीव की। तो ये जो 1 to 60 की जर्नी है इसमें लॉट्स मेनी स्टॉक्स हैव शोन मी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट स्टॉक्स। तो इन सबको मैंने समराइज करने की कोशिश की है इस वीडियो में। उसी पे आज बात करने वाला हूँ कि मेरी लर्निंग क्या रही है ओवर पास्ट 7 years एज अ इन्वेस्टर। जो लोग साधन पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है अमिताभ बस। मैंने IIM से MBA किया है और उसके पहले मैंने BTech किया है VIT मिश्रा से। Then I did a job for 2 years with Tata Motors before my MBA. Post MBA, I work in corporate finance roles with various kinds of institutions like ICICI Bank, Hero FinCorp, L&T Finance, and ILFS for a brief stint. So इन सब सारे एक्सपीरियंस ने शेप आउट किया मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी को। इसी की बदौलत मैं किसी भी स्टॉक के बारे में मार्केट से बेहतर एंगल से एनालाइज कर पाता हूँ बिकॉज आई हैव एडिशनल angle to look at those stocks from bond investor, maybe from a structured finance guy also, sometimes as a project finance guy I've also worked. So इन सारी चीजों को मैंने एक मेथड में डाला हुआ है जो मैं शेयर करता हूँ अंडर साधन मेंटरशिप प्रोग्राम। I have an announcement to make that we are launching the batch 5 of this program which is going to be live. So I will just give you a brief synopsis of this program alongside my investing journey, how I have got to structure of this course मैं डिकोड करने वाला हूँ इसमें। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड वीडियो के अंत तक मैं एक चीज आपको गारंटी करता हूँ दैट यू विल नो दैट there are many ways to reach nirvana, whether the nirvana is financial nirvana, whether the goal is financial independence, or you want to stay happy and stay invested into stock market because it makes you intellectually curious. So जो भी आपका एजेंडा हो लाइफ में जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, you will be richly rewarded after this video because I see stock market as a journey and I would like to onboard you as my mentee who are serious, and that's why I have kept a price point which makes it position in such a way that serious candidate के हैं जिनके साथ मैं समय स्पेंड करूँ वो लोग सीरियस हो इन्वेस्टिंग को लेकर के ताकि मल्टीबैगर रिटर्न्स हर कोई बनाए। और मेरे बहुत सारे मेंटीज ने ऑलरेडी मल्टीबैगर्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं और some of them I'm also invested into. So I have been a beneficiary of this program. So let's get into this program with a detailed understanding. With this whole set of multi-baggers, you would wonder that how do I identify multi-bagger stocks? So first मैंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया हुआ है स्टॉक इवैल्यूएशन का। अगर वो उस चेकलिस्ट पे सारे आइटम पे वो टिक होता है स्टॉक्स तो फिर मैं उस इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर करता हूँ और फिर मैं एक चीज इंश्योर करता हूँ कि उस सेक्टर में टेलविंड है या नहीं है। अगर टेलविंड है देन आई इंक्रीज माई एलोकेशन एंड अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है देन आई एम इन पोजीशन इनटू सच बिजनेसेस। इस पूरी लिस्ट में 60 स्टॉक्स जो टाइम टू टाइम मैंने शेयर भी किए हैं उसमें कॉमनैलिटी दो तरीके से बताई जा सकती है कि इसमें दो टाइप के मल्टीबैगर्स हैं। एक ऐसे हैं जिसे मैंने बॉटम अप अप्रोच से फाइंड किया है, यानी कि पहले मुझे कोई और कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी लगी, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा, फिर मैं उस स्टॉक के बारे में डिटेल में गया, उसके सेक्टर को समझा और फिर मैंने एलोकेट किया। दैट इज बॉटम अप अप्रोच। बट जो दूसरा अप्रोच है वो भी मैंने बहुत बार यूज किया है जिसे टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। जैसे पहले मैं
इकोनॉमिक कंडीशन को मैंने स्टडी की, उसमें जो सेक्टर अच्छा करने वाला है उसको स्टडी किया और उसमें जो इंटरेस्टिंग कंपनी है उसको स्टडी किया। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो टॉप डाउन अप्रोच में हमने जुपिटर वैगन, टीटागा रेल सिस्टम, जेन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स को ढूंढे जो हमारे लिए 5x to 10x 12x के बन चुके हैं। बट रिसेंटली हम लोगों ने इसी अप्रोच से अनूप इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट किया है और सरोटेक पावर में भी इन्वेस्ट किया है। तो सरोटेक पावर हैज आल्सो बिकम 2-3x फॉर अस। आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ दिस होल टॉप डाउन अप्रोच वर्क्स विद 2 एग्जांपल्स। बट बिफोर वी गो देयर, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ बॉटम अप अप्रोच have helped me find multi-baggers like Deepak Fertilizer and Petrochemical, Jazz Engineering and Shakti Pump. एंड लेटली मैंने सिल्चर टेक्नोलॉजीज और अद्वैत इंफ्राटेक जिनके बारे में आपको बखूबी पता है बिकॉज मैंने डिटेल एनालिसिस की हुई है बिफोर दे बिकम मल्टी बैगर्स, वहाँ पे बॉटम अप अप्रोच किया था। सबसे पहले टॉप डाउन मल्टी बैगर्स की बात करें तो सरोटेक का जो फोकस था इनटू 2 सेक्टर्स, वन वाज ईवी एंड अदर वाज सोलर, दैट वाज मेकिंग इट यूनिक। इस कंपनी की बिजनेस जो है वो B2B में है, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। एंड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो एक हंगर है, हंगर इन द बेली, उसके कारण ही is very growth focused and this management has the ability to adapt to different situations. So that's why this Servotech was a good pick and it had worked for us. Also sectoral tailwind तो दोस्तों आपको पता है EV में भी थी और सोलर में भी है, तो इसके कारण ये स्टॉक मल्टी बैगर बन रहा है। वहीं अनूप इंजीनियरिंग में मैं डिटेल्ड वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। यू ऑलरेडी नो दैट दिस सेक्टर हैज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 3 quarters बैक टू बैक एंड द मैनेजमेंट टीम इज़ वेरी एक्सपीरियंस, वेरी एबल मैनेजमेंट टीम है। और कंपनी का जो फोकस राइट टाइम पे राइट जगह पे होना, यानी कि डोमेस्टिक से उन्होंने जो गियर अप करके और एक्सपोर्ट फोकस क्या कर लिया था जस्ट बिफोर डोमेस्टिक मार्केट वाज स्लोइंग डाउन। सो दैट्स द एडेप्टेबिलिटी मेड इट अ मल्टी बैगर एंड दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टेड इनटू अनूप इंजीनियरिंग। अगर हम बॉटम अप स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की बात करें तो सिल्चर टेक्नोलॉजी जो कि हमारे साधन की ROIC शिफ्ट ट्रिगर है उस पर सेटिस्फाई करती है। सिल्चर टेक्नोलॉजी में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस था, तो सिल्चर टेक्नोलॉजी में वी फाउंड दिस स्टॉक यूजिंग आवर अल्फा एक्सेलेरेटर फ्रेमवर्क एज वेल एज साधन ROIC शिफ्ट, जिसके बारे में मैं अपने मेंटीज को बार बार बोलता हूँ कि आप जाकर के उसको अप्लाई करना सीखें तो जरूर आपको मल्टी बैगर मिलेंगे। तो सिल्चर इज अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। साधन ROIC शिफ्ट फिल्टर, इस पे ये बहुत ही फ्लाइंग कलर से पास आउट हुआ। साथ ही इस कंपनी के सेक्टर में रिन्यूएबल में ये एक नीश प्लेयर है जो कि सोलर के लिए ट्रांसफार्मर बना रहा था और बहुत छोटा स्केल पे इसे हमने आइडेंटिफाई किया था। सो दिस हैज बिकम अ 5-6 बैगर फॉर अस। साथ ही साथ इसमें कैपेक्स का एक प्ले है। तो ये सारी टेलविंड्स और ये सारी सिचुएशंस मिलकर के लिए मल्टी बैगर बना है फॉर अस थ्रू बॉटम अप इन्वेस्टिंग। वी लाइक्ड अद्वैत मैनेजमेंट वेरी मच एंड उनके प्रोडक्ट को हमने पहले स्टडी किया। उस समय तो वो ट्रांसमिशन लाइन बना रहे थे, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन की कोई बात नहीं थी। तो ये प्योर प्ले बॉटम अप स्टॉक पिक किया हुआ है और मैनेजमेंट हमें अच्छा लगा। मैनेजमेंट की अप्रोच हमें अच्छी लगी जो कोलैबोरेटिव है बाय नेचर। इनके प्रोडक्ट स्पेशलाइज हैं और वो डिफरेंट सेक्टर को नाउ दे आर रीडिंग देमसेल्फ विद डिफरेंट प्रोडक्ट which are catering to different sector which are growing in nature like solar, green hydrogen और transmission itself is a growing sector जो उनकी specialization है already। कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ शोकेस किया है थ्रू देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद लाइक्स ऑफ KPI Greens and some China based company who are kind of market leader in green hydrogen or into OPGW manufacturing. So with these case study you would be wondering कि हमारा approach क्या है, because you know that there are 2 categories, but how to get to that investment framework. So we start with a foundational layer. We try to impart with what is the basics of investing, why stock market exists, what are the fundamental reason why companies come to stock market. We understand this by through the language of the business, which is accounting and financial analysis. पे हम लोग around more than 3-4 weeks we spend there. Then we use Sadhan toolkits. Once we get adapted with Sadhan toolkit, then we move to business analysis. Once we understand business, then we go into management analysis. That अच्छे management को कैसे pick करें, because बहुत बार एक sector में आपको choice होती है कि A के साथ जाएं या B के साथ जाएं। हम पे differentiating factor is an intelligent fanatics जो उस स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है, वोट कर रहा है, सो प्रमोटर को कैसे आइडेंटिफाई करे, वो शेयर होल्डर फ्रेंडली भी होना चाहिए। सो बहुत सारी कंसिडरेशन है टू असेस अ गुड मैनेजमेंट क्वालिटीज। Then we share the 5 frameworks which are coming from Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, Fitz Fisher, Peter Lynch, and some Indian investor like
pull up Vishal, इनके frameworks को हम लोग decode करते हैं so that you also get to see it from your lenses that how Warren Buffett would look at, let's say, Advait projects. Whether Phil Fisher would have picked Advait Infratech or Warren Buffett. And that deep insight I would like to give to my mentees. And that's why we share all the 5 frameworks so that you pick up one for yourself, which could be a mix of all 5, or it could be derived from Sadhan की अपनी जो basic framework है उससे भी आप सीख सकते हैं, उसको भी apply कर सकते हैं. And finally, we go to the valuation part, when to buy and when to sell. So the most important question was for valuation को समझ करके, then we close the whole thing and we give assignment to find out good companies which they understand using our framework, and then they give us a presentation. और उनके प्रेजेंटेशन को मैं बारीकी से देखता हूँ, उनको फीडबैक देता हूँ, so that they know that where they are faltering on. And this doubt clearing session always happens all the time because the delivery is purely interactive. वीकेंड पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हर वीकेंड पे संडे को केस स्टडी बेस्ड अप्रोच है हमारा, और हम असाइनमेंट भी देते हैं एवरी मंथ. वी कैन गिव असाइनमेंट सो दैट यू रिमेन एंगेज विद द लर्निंग पार्ट, बिकॉज इफ यू लर्न एंड डोंट अप्लाई देन यू विल गिव दिस नॉलेज. सो वी कीप healthy, not healthy goals, but modest dose of assignment so that you learn and we kind of apply that. We also have doubt clearing sessions so that whenever you are going ahead, you don't lose what you have learned in previous lessons. Everything gets recorded. Even if somebody misses the class, he gets access to our recordings and he can on demand learn it. Time to time, we keep sharing investment rationale with mentees, but these are for learning purposes where we try to showcase कि हमने इस मॉडल को कहाँ पे यूज किया, इस फ्रेमवर्क को कहाँ पे यूज किया. तो उस टाइप के केस स्टडीज हम लोग शेयर करते हैं, which sometimes become live, and we also discuss live market out there sometimes, because I think this is not a detailed course. It has to be dynamic and it is linked to markets. Market में कुछ होता है उसके मैं अपनी फाइंडिंग्स वहाँ पे शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप पे वो लोग कनेक्टेड रहते हैं apart from the portal, the website. अगर हम टाइमलाइंस की बात करें तो this is the around 26-week course. 1 to 6 week is about foundations and financial analysis, where I kind of teach them how to look at annual report and how to develop an investor mindset. So the mind training is also a foundational thing for us. So behavior psychology पे मैं बात करता हूँ that how to hold, how to develop the investor temperament to help yourself to become a successful investor. Then 7 to 11 वीक में हम लोग साधन टूल किट डिस्कस करते हैं, विच इज़ बेसिकली साधन कवच, जो एक्सेल एनालिसिस टूल है जो आपके पास होगा तो आप 2 मिनट में किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिसाइफर कर सकते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और you can talk to the CFO of the company that what's wrong with the company. So that kind of analysis you can produce in just 2 minutes using Sadhan Kavach. Then we look at the DOL calculator, which helps us identify a multi-bagger for future, whether the company has that in DNA or not to become a multi-bagger. So that we find out using DOL calculator. Sadhan ROIC shift, I already told that any company can be looked at through Sadhan ROIC shift framework, and then you can position itself in its journey that ये company की journey में वो कहाँ पे है, because it's not your journey, it's your journey with stock is one thing, but company की भी एक अपनी journey होती है और वो बहुत बार हमें समझ करके इन्वेस्ट करना होता है. So that gets sorted with Sadhan ROIC shift. Then we spend lots more on avoiding the pitfalls like where not to invest. So we use forensic analysis to figure out bad corporate governance stocks using financial fraud detection methods, which I share. I have a negative list, so I keep sharing with them that गलती से भी इन स्टॉक्स में पोजीशन मत लेना, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ हिस्ट्री. सो टेंटेड हिस्ट्री वाले स्टॉक्स को हम लोग फ्लैग ऑफ कर देते हैं. And we don't want to overdose with the information, so it's basically need based. If a mentee is very curious, he can extract lots more value because he has access to 10 years of corporate experience, which I have with the corporate in bond market, in marquee institutions like CICI Bank, Tata Motors, L&T. So I had seen it from the top and from the bottom. So that's why I can help any retail investor grow his framework, not just as a financial analyst, which is sometimes secondary. Main thing is how to pick up good businesses, and that requires a businessman angle as a professional angle also, because I had worked in such organizations, so I know their point of view. And once you have this whole 360-degree view of a business, of a product, you tend to make no mistakes, and that is evidently clear with our picks. You can see that whenever we have picked, it has mostly become multi-baggers in most of the stocks. So that's not just result of financial analysis, but the experience I carry. So that I try to impart to my mentees.
and your success rate definitely improves after 11, 12 weeks. Then we share the checklist which we use, and not to forget Sadhan मोड calculator I share, जिसके हेल्प से वो पता कर पाते हैं कि कंपनी में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है या नहीं, जो भी कोर टेरिट है ऑफ वॉरेन बफेट line of investing. Then we talk about the management quality check, where we try to avoid bad corporate governance companies, and we share how to find out management quality using annual reports. Then 17 to 19 week we go deep down into industry analysis the way we do on Sadhan. So we do have a separate industry analysis segment for them, like we discuss banking there, we discuss something which we have not discussed on Sadhan, and obviously Sadhan के जो case studies हैं वो वहाँ पे discuss होते ही हैं, जो industry analysis हम वहाँ करते हैं. उसके बाद फिर we talk about the valuation and when to sell. क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन से रेशियोज देखने होते हैं जो मीनिंगफुल हैं, और किस सेक्टर में कौन सा रेशियो वर्क करता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है. ऑल दोज थिंग्स गेट्स कवर्ड बाय 17 to 19 वीक्स. लास्ट 2022 वीक ईयर मार्क वन क्लास ईच फॉर पीटर लिंच, फॉर वॉरेन बफेट, फॉर चार्ली मंगर, फॉर फिल फिशर, so that ones get sorted on those 5 frameworks which are advanced in nature. Then lastly we cover up the assignments which has been picked by mentees, and unki feedback मैं उनको देता हूँ. So that's the whole and soul of this roadmap to success into stock market investing by Sadhan into Sadhan Mentorship program. So this is in short the whole detail of Sadhan Mentorship programs. If you have any further query, then you can reach out to the number provided in this video, and you can check out learn.amitabhasya.com, and I've provided a link. Other mentees, previous mentees has spoken about this course who has successfully got trained under Sadhan Mentorship program. So do spend some time to hear to those credentials, and then you can make up your mind, because time is right now perfectly aligned with somebody who is curious and wants to learn, because a bear market creates a greater investor than a bull market ever can. So take the best out of this opportunity and join Sadhan Mentorship program and connect with us for a longer period. My name is Moksha, and I've done my CFA recently, and I currently work in a family business. How I came across this, what it was actually his YouTube channel. So I was having difficulty studying the pharma sector, and I think it was like one of his first simplified the pharma sector. So that is how I started following, because I think he has a very good approach of simplifying complex. To ignore certain sectors, like let's say the railway sector or something, because I used to read books, and they used to always focus on sectors which you need to ignore. But Sadhan Mentorship, I read every industry now. There is, every stock has a certain price, and if it's cheap, I can buy it. So there's a thing a lot of things have changed at company. Stock which I found was Skipper. It was actually in Sadhan's portfolio as also. I think what I liked about is proxy investing, which I learned through Skipper. I had very high conviction, because I done a lot of research also on that stock. I had bought it through the rights issue, so it was kind of a leveraged bet, and my returns were very nice, 3-4x on my very high conviction bet. Like Monish advice, someone you got the opportunity and you can invest if you're not understanding investing. Okay, तो that time मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं कॉपी तो कर रहा हूँ, बट उसका फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंपनी का डेवलपमेंट पाथ, ये क्लैरिटी नहीं थी. ये था कि कंपनी का प्रोडक्ट ये है, कंपनी प्रॉफिट में है. आफ्टर 6 मंथ जब ये सारी चीजें हो गई एंड so many classes attended, अभी क्लैरिटी क्या आई है कि यदि अब कॉपी भी मैं कर रहा हूँ या खुद से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का डायरेक्शन क्या है, और कंपनी 10x क्यों होगी. उसके पीछे क्या लॉजिक है. और यदि मार्केट ने उसको 40% डाउन भी कर दिया है ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि कंपनी जैसे ही उस पाथ पे अपनी अर्निंग शो करेगी, मार्केट उसको ऊपर चढ़ा देगा और मौका नहीं मिलेगा. ये सारी क्लैरिटी बहुत क्लियर है. मतलब ये क्लैरिटी शायद मुझे लगता है कि मैं बुक्स पढ़ता तो इतना क्लियर हो पाता कि नहीं पाता, लेकिन एक लाइव 1-to-1 कम्युनिकेशन के कारण यदि मेरे अंदर कोई भी डाउट भी है ना, वो क्लियर हो जा रहा है. तो दैट इज आई गॉट बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी टू लर्निंग 1-to-1 लाइव सेशन, क्योंकि इतना टाइम शायद कोई दे नहीं सकता है.
और कोई देना भी नहीं चाहता है। लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बनाओ और ऑनलाइन बेचो और पैसा बनाओ। और मैंने देखा, मैं कई लोगों का अटेंड भी किया हूँ, तो वो लोग रिकॉर्डेड सेशन रखे हैं, बट ये जो आपका सिस्टम आपने डेवलप किया है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वन टू वन लर्निंग का। एंड आपके थ्रू जो इंडस्ट्री फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट था, वो एक बहुत अच्छा मौका मिला, लर्निंग मिला कि किस तरह से फाइनेंशियल देखा जाता है, और इसका ऑर्डर बुक और इसके क्लाइंट्स क्या है, उसका पैसा वो कहाँ से पाएगा, एंड द कैपेसिटी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि मीडिया में ये सब बातें तो बोली नहीं जाती हैं, और वी आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट कि ये इस पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो क्लैरिटी आई है, तो थिंग्स आर गोइंग गुड। Mentorship program is for like serious people. The mentorship is not something like after the mentorship you will be like able to look at any stock. You still have to do a lot of work behind it. So it's for people who want to be a good stock picker and are very serious about it. Would be if a promoter is like chasing anything which is fancy, like in the new market. For example, if the company has been listed for the last 10 years, like 8 years ago, you might be before something which was trendy that time. Now we might be focusing on something which is trendy now. As an investor, we might just look at it and we must think कि ये तो बहुत अच्छा growth कर रहा है, but we need to like मतलब look के पहले कैसा कर रहा है. And a green flag would be the management walking the talk. If a company says something and he does that or maybe overachieves it, so you have to like, look at the history. Thanks for watching.